हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय किचन अगेन। जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, इट्स अ वैलेंटाइन डे स्पेशल रेसिपी, मड केक विद स्ट्रॉबेरी कंपोट। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले यहाँ मैंने बटर लिया है, इसके अंदर मैं ले रही हूँ शुगर और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। That's it। अब इसके अंदर लूँगी मैं एग्स। इसको भी इसमें मिक्स कर देंगे अच्छे से। Add little bit of flour and cocoa powder। अब मैं इसके अंदर लूँगी मेल्टेड चॉकलेट और बहुत थोड़ा सा पानी। मैंने यहाँ अपना टिन प्रिपेयर करके रखा हुआ है और इसको अब मैं इसके अंदर पोर कर दूँगी। That's it. Now I'll bake this at 180 degrees Celsius for around 30 to 35 minutes. In between हम अपना कंपोट रेडी कर लेते हैं। For that I have a frozen strawberry। इसे मैं एक पैन में ले लूँगी। इसके साथ ही मैं ऐड करूँगी शुगर और साथ ही मैं थोड़ा सा डालूँगी पानी। कंपोट इज़ बेसिकली अ जैम जो कि मैं अपने स्पॉन्ज के अंदर लगाऊंगी। That's it। अब मैं इसे ठंडा करने के लिए रख दूँगी। पैन के अंदर मैं लूँगी फ्रेश क्रीम और इसको हल्का सा बॉईल कर लेंगे। जैसे इसमें बॉईल आ जाएगा बंद एंड आई ऐड चॉकलेट और इसको कंटिन्यूसली विस्क करते रहेंगे हम। इसको भी अच्छे से ठंडा कर लेंगे। एक बार जब चॉकलेट गनाश अच्छे से ठंडा हो जाएगा, मैं इसके अंदर ऐड करूँगी व्हिपिंग क्रीम। दैट्स इट। और इसको फ्रिज में रख देंगे सेट होने के लिए फिर अराउंड 15 मिनट्स। टाइम टू असेंबल द केक। सबसे पहले फर्स्ट लेयर और मूव्स को मैंने पाइपिंग बैग में डाल लिया है। जैम हमने प्रिपेयर किया था। Then goes the second layer. Then I'll go with last layer of my cake. Okay, now
I'll put some strawberries. I have fresh strawberries here, so I'm adding this as well, and that's it. So we are ready to celebrate this Valentine Day with this special cake. Hope you like the recipe. If you like this recipe, don't forget to write me, and I'll see you in the next episode. Bye. Wish you all very happy Valentine's Day. Bye.